And during the last visit of Prime Minister Shehbaz Sharif, who's a firm believer that Pak-China friendship will take this country towards prosperity. So, ladies and gentlemen, it is my great honor to welcome Professor Ahsan Iqbal Sahib, Federal Minister for Planning and Development and Special Initiatives. Please give him a huge round of applause. And at the end, I would just like to say, Pak-Chin Dosti Zindabad, Jang Ba Yoi Won Soy. Thank you. वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारर पाकिस्तान और चीन के सफ़ारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब अहसन इकबाल गुफ्तगू करते हैं। Excellency, Deputy Chief of Mission, Embassy of China, Mr. Sher, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and ni hao. It is a profound honor for me to stand before you tonight at the Pakistan-China Friendship Center, a venue that is not merely a building, but a living monument to the enduring bonds that unite two great countries and civilizations across geography, history, and shared destiny. We gather tonight not simply for a cultural evening. We gather to celebrate a historic milestone in 75th anniversary of establishment of diplomatic relations between Islamic Republic of Pakistan and People's Republic of China. 75 years, 3/4 of a century, a journey defined not by convenience but by deep conviction. A partnership built not merely on shared interests, but on shared values, on mutual respect, on ironclad trust, and on a friendship that has only grown stronger with each passing decade. And I always say that the unique dimension of this relationship is that in 75 years, Pakistan-China friendship has never seen a moment of autumn. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers of cooperation and collaboration with every passing year. Ladies and gentlemen, our friendship is described quite uniquely in the language of nature itself. It is higher than the Himalayas, deeper than sea, sweeter than honey, and stronger than steel. But now we have a new dimension, that is, it is higher than the skies, because 2026 will take Pakistan's first astronaut into space on a Chinese space mission, and Pakistani astronaut will be the first foreign astronaut to enter Chinese space center. So this friendship now touches the heights of the skies. These are not mere poetic flourishes. They capture a geopolitical truth that the world has come to recognize, that Pakistan and China stand as all-weather partners, iron brothers, who have weathered every storm together, who have stood shoulder to shoulder in times of peace and in moments of challenge alike. When we look back across the arc of this extraordinary relationship, we see a story of continuous deepening and evolution. From the early establishment of diplomatic ties to the forging of a comprehensive strategic partnership, our relationship has scaled new heights of cooperation. And at the heart of this evolution stands a transformative initiative
that I have had the honor to nurture as a founding minister the China-Pakistan Economic Corridor, and I feel great honor that from Pakistani side, I had the honor and distinction to sign both MOUs of CPEC Phase 1 and CPEC 2.0. I have always said that, and I say it again tonight, CPEC is not merely a collection of roads, energy plants, or industrial zones. CPEC is a bridge. It is a bridge of development, a gateway to shared prosperity, and the most concrete economic manifestation of our time-tested brotherhood. From energy security to digital connectivity, from Gwadar Port to special economic zones, CPEC today represents a new paradigm, a living model of long-term strategic cooperation grounded in mutual trust can catalyze genuine socio-economic transformation. It is the flagship of Belt and Road Initiative, and Pakistan is proud to carry that distinction. But while infrastructure and economics form the backbone of our strategic partnership, it is culture, art, and people-to-people contact that form its very beating heart. And this is the truth that no economic indicator can fully capture. And you saw glimpses of that beating heart today in the performances by the youth of both countries. Economic corridors are built with concrete and steel, but the corridors of future, the corridors of a harmonious, interconnected global community are built through hearts and minds. They are built through the exchange of music and poetry, through the sharing of traditions and cuisine, through the laughter of children who grow up knowing each other's stories. Tonight's cultural evening speaks precisely to this dimension of our partnership. Culture is a universal language. It transcends borders, dissolves misunderstandings, and forges a deep, empathetic connection between societies that no diplomatic communique can fully replicate. By celebrating each other's heritage, by sharing our art, our music, our traditions, and our civilizational wisdom, we are doing something profoundly important. We are preparing for our younger generations to inherit a relationship that is even stronger, even more vibrant, and even brilliant than the one we have built today. Ladies and gentlemen, as we celebrate 75 years, it is also a moment to look forward with renewed ambition and purpose. The world today stands at a crossroads. The center of gravity of the global economy is shifting decisively towards Asia. Regional connectivity is no longer a luxury, it is imperative. And in this rapidly changing landscape, the partnership between Pakistan and China has never been more consequential. Pakistan's vision is clear: to transform itself into a hub of regional trade, transit and cooperation. Gwadar Port, the crown jewel of CPEC, stands at the heart of this vision. It is more than a maritime, it is the future economic gateway of our entire region. And as we deepen our cooperation under the frameworks of BRI and CPEC, and as we work to align our shared goals under the Global Development Initiative, Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiatives, we are doing nothing less than co-authoring a new chapter in the story of South-South cooperation. Pakistan believes deeply
that development is a collective journey, not a zero-sum competition. In this spirit, our partnership with China, grounded in mutual benefit, sovereign equality, and shared aspiration, offers a powerful model for the world to follow. That cooperation can achieve what confrontation never will. In closing, I would like to extend my warmest appreciation to Honorable Minister Attaullah Tarar and the Ministry of Information and Broadcasting for their vision in organizing this spectacular cultural evening. This evening is a tribute not only to 75 years of friendship, but to the countless individuals, diplomats, artists, and students and ordinary citizens of both nations who have, brick by brick, year by year, woven the fabric of this extraordinary partnership and friendship. Let us leave here tonight with a renewed sense of commitment to further strengthen our cultural harmony, to deepen our strategic bonds, to build upon the magnificent foundation laid by our founding fathers, and to ensure that Pakistan-China friendship continues to shine as a beacon of peace, stability, and shared prosperity in our region and beyond. The next 75 years belong to our youth. Let us give them a partnership worthy of their aspirations. And before I conclude, I really want to put on record for our own people to know that when we started CPEC Phase 1 in 2013, Pakistan was suffering from 18 to 20 hours of power shortage daily. At that time, we had announced an energy policy for investors, for our own local investors, for investors from all over the world. Come and invest in Pakistan because Pakistan desperately needed energy to overcome power shortage. At that moment, Pakistan was facing serious security challenges also, when no one was coming forward. Not even Pakistan's own investors were willing to invest. Ladies and gentlemen, it was China that came forward and invested billions of dollars in Pakistan to show that a friend in need is friend indeed. And China is more than a friend, it is an iron brother. It has demonstrated not once, not twice, but at every occasion of need that it has stood with Pakistan shoulder to shoulder. On this 75th anniversary, I would also like to salute those thousands of Chinese workers and engineers who stayed away from their homes for years to construct and finish these projects under CPEC that were vital for Pakistan's development. We salute their courage, we salute their sacrifice, and we salute their commitment. A very tragic incident happened some time back in Dasu energy project when a terrorist action took place. After a few days, I was chairing meeting of Chinese enterprises to give them confidence and assurance that every Chinese in Pakistan is our valuable guest and it is our duty to give them security. In that meeting, the general manager of that project came straight from airport to attend that meeting. And what I want to share with you is, he said that when I was departing Beijing,
my wife and daughter had heard about that incident, and they asked me that, is it really important for you and safe for you to go to Pakistan? And he said, I told them, Pakistan is my second home, and I must go to do my duty to my second home. This is the spirit that our Chinese brothers and sisters have shown for Pakistan's development, and we recognize it, we salute it, and I hope that with every coming year, this friendship will grow stronger and will build a future of shared prosperity, as President Xi Jinping has repeatedly mentioned and promised. Long live पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल खिताब कर रहे थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग भी इस वक्त बराह रास्त ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब церемония подписания документов завершена. बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दूसरे सदर पुतिन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से इस वक्त मुलाकात हो रही है। इस वक्त दोनों रहनुमा टेबल पर मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, आलमी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर इस वक्त मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत के बाद वहाँ पर मौजूद हैं, मुश्तरका ब्रीफिंग से गुफ्तगू कर रहे हैं। Добрый день. Очень рад вместе с президентом Путиным встретиться с вами. Президент Путин уже 25-й раз посещает Китай. Это само по себе свидетельствует о том высоком уровне и особом характере पुतिन की इस वक्त बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और रूसी सदर पुतिन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात हुई। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, आलमी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल किया। और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए शी जिनपिंग ने कहा है कि मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई का खात्मा ज़रूरी है, जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर ने खबरदार किया है कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। आपको बताएं कि दौरा इंतहाई अहम वक्त पर किया जा रहा है, जिसमें चीन और रूस को एक ज़्यादा मुनसिफाना और माकूल तामीर को फ़रोग़ देना है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह तक पहुँच चुके हैं। पुतिन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगे। आपको बताएं कि दौरा रूस और चीन के दरमियान 2001 के दोस्ती और ताउन मुआहदे की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तवानाई मनसूबों, दिफाई शराकतदारी और इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत मुतवक्किल है और अब बातचीत हो भी रही है, जो कि बराह रास्त मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यूक्रेन जंग और मगरबी पाबंदियों के बाद रूस चीन के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत कर रहा है। सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और चीन की जानिब से ताउन के 20 दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए हैं। मुआहिदों में एक तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल है। सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदों में एक तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल हैं। ऐसे वक्त में ये मुआहिदे किए जा रहे हैं जब ईरान की जानिब से जो आबनाए होर्मुज़ है वो बंद है और ईरान जो है वो चीन का एक बड़ा पार्टनर है एनर्जी सप्लाई करने का। और
सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका अलामियों पर दस्तखत किए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और चीन की जानिब से ताउन की 20 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए हैं। मुआहिदों में एक तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल है। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और चीन की जानिब से ताउन की 20 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए हैं। मुआहिदों में एक तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल है। सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। ये तकरीब भी इस वक्त जारी है। बराह रास्त सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद प्रेस ब्रीफिंग जारी है। आपको सिर्फ बता रहे हैं कि सदर पुतिन व्लादिमीर पुतिन कल मंगल को चाइना पहुंचे थे। बीजिंग पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया था और आज उनको पीपल चाइना ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में पहुंचाया गया और वहां पर उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। और अब चीनी सदर और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका अलामियों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी तवक्को की जा रही थी। रूस और चीन की जानिब से ताउन की 20 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए हैं। बीजिंग में मुआहिदों में एक तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल है। क्रेमलिन की जानिब से ये बताया गया है। ये बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और अब न्यूज़ अपडेट। Geo News updates are brought to you by Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today. and Cerelac का स्पेशल न्यूट्रीब्लेंड जिसमें है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा and and no hair fall worries. नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान्स बेस्ट हेयर फॉल सॉल्यूशन। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। वस्ती कुतुब में शिद्दत पसंदों के 2 गिरोहों में झड़प के नतीजे में 18 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक शरपसंद कमांडर मुमताज उम्मती भी मारा गया। और वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को केपी के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत ने रुकावटों की सूरत में वीडियोस और तस्वीर शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान्स बेस्ट हेयर फॉल सॉल्यूशन। नन्हा सा जहन, बड़ा कुछ है सीखना, इसीलिए इसके नन्हे पेट के लिए बनी नेस्ले सेरेलैक न्यूट्रीब्लेंड की बड़ी ग़िज़ा। इसमें शामिल विटामिन B1 और आयरन ज़हनी नशोनुमा में मदद करें। नेस्ले सेरेलैक। 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन and Telenor, Call more than ever before. Introducing Sandal Red Onion Shampoo. बालों के लिए ताकत का डबल बूस्ट। प्याज और प्रो विटामिन B5 का कॉम्बिनेशन जड़ों को स्ट्रॉन्ग करे और बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाए। संदल रेड अनियन